So I assume that this is a perfect timing to tell you about my motovlogging setup. In this video I'm just telling you about my experience, what I am doing right now to shoot a motovlog. As you can see here, this is my beautiful helmet. So let me show you what I'm using right now. So this is the camera which I really use to shoot a motovlog, and it comes with a case. This is called SJ Cam SJ8 Pro. Alright, so this is a quick look of how I mount my action camera on this particular helmet. So as you can see over here, this is a mount, this is a bracket, and here are some mounts which I really used to just extend it from here, and action camera goes inside this box, and I just used to put it like this. So this is a pretty simple technique to install a action camera on your helmet. How do I record video while doing a motovlog? I used to use this camera. This is SJ Cam SJ8 Pro. This is a pretty decent camera, and the footage come out of this camera, I just loved it. It can produce up to 4K 60 FPS file. Yes, I'm using this camera at its peak capability, which is 4K 60 FPS, and the footages are just superb. I just love the footages of this camera. Sharpness is excellent, the color is excellent. So this was my first improvement to get the maximum quality out of this camera. So this is the time to tell you that which setting do I use to shoot a motovlog inside this camera. So let's go to the camera. Okay guys, as I have told you about that I shoot in a 4K, but that is not a complete story. There are many more settings which I have changed in 2021. As talk of 4K, there are two types of 4K in this action camera. One 4K is 4K Ultra, which can only capture about 30 FPS and 24 FPS, and there is also a 4K, normal 4K. It is just 4K. It can catch up to 60 FPS. So this resolution is the maximum that this camera can go up to, and there are more settings which come up here when you click over here. This is a EV. This is like it just control exposure. I usually kept it to 0. This is default, and I just kept it like that. And white balance to auto, I put it a white balance into auto. Power on record, this is a power on button, and this is on the top is a record button. Whenever I used to ride a motorcycle, I do not have that much time to, I remove my hand from the handlebar and just press this button, and after some time press this button to record it. So this is the reason why I choose power on record. Whenever I used to power on this action camera, it started recording automatically without anything. Color profile is a must for video editing, but I used flat footage because I just want to color grade the footages which came out of this camera. Metering mode, sometime I just put it on a center, but most of the time I just put it on an average. This is an important setting for me, gyro stabilizer. Okay, this camera is only having EIS, it is not having OIS. For stabilization of footage, it just crop a little bit from a side and top and bottom. It just crops a little bit to stabilize the footage. So I just do not turn it on because it just crop the footage, and then what is the point of wide angle? So this is the reason I just turned the gyro off. Encoding, especially H.264, I just do not like to use H.265, so I use H.264. Volume, I don't care. Sharpness is standard, which is at default. Distortion correction off because I just want a wide angle footage from this camera. So distortion correction will just crop a little bit, so I just do not like it. Loop recording is off. File size 5 minutes. Video quality at its finest. This is the maximum video quality. ISO, this is auto ISO. Max 64 means it can go up to maximum 6400 ISO. So these are the settings according to my preference. I just used to this camera in these settings. So this was the half story which was concentrated toward the video part of a motovlog. Now let's continue to the half story of a motovlogging, which is the audio part of a motovlogging. How do I record audio? Audio recording is a pretty simple thing according to my setup. In my past vlogs, I have told you many times that I use this 100 rupees ka cheap wala mic. I just insert this 3.5mm jack to my phone and start audio recording inside the default app, which is audio recorder. What about mic positioning? I made a dedicated video regarding mic positioning. You can just click over here to see that, so you can watch that vlog. That vlog is a must for an audio, because audio plays a very important role when it comes to a motovlog. So yeah, this was the complete story of motovlogging. I think I've just told you everything, and there's nothing left to tell you about my motovlogging setup. Yeah, this was my complete motovlogging setup which I'm going to use in 2021. Probably if I'll change anything, I'll just let you guys know. I hope you can hear my voice, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हेलमेट में मैं खुद ही चिल्लाने लगता हूँ और
मुझे खुद को आवाज़ नहीं आती। तो हम लोग निकल पड़े अपने, कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, बस ऐसे ही हम लोग निकले जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि 4K में कैसा लगता है। वाइजर उठा दे भाई, लंबा समय है। एंड आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माई वॉइस एंड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड द। ये देखो इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ी भाई उसने, तो पूरा ही चिपका दिया। जल्दी जल्दी चलो जल्दी, अरे चलो बे, कौन है यार? अरे बाप रे बाप भाई साहब, ट्रैफिक लग गई यहाँ पर। ओह ये कौन सी गाड़ी है? शीशा एवेंजर का गाड़ी, पता नहीं कौन सी, नहीं पढ़ पाया। अच्छा तो गाइस इस समय मैं 4K 60 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्वालिटी जो है वो अच्छी दिख रही होगी। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं 1080p 60 FPS पे भी मैं कभी कभी शूट कर लेता हूँ वैसे, क्योंकि जो 4K की जो फुटेज होती है, चलो यार, अरे चलो, क्योंकि 4K की जो फुटेज होती है वो फुटेज बहुत बड़ी होती है वो, है ना, तो एडिट करने में भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। चलो सोते क्या रहते हो, सोते रहते हैं सब। ये देखो ये ठेला कहाँ बीच में लेके कहाँ चल रहा है। हम जाएंगे सामने से, इधर से नहीं जाएंगे। ये वाली रोड ही मनहूस लगती है मेरे को। तो रोड में बहुत ट्रैफिक होता है यार, अब बेफालतू का ट्रैफिक होगा। अरे रे ये पानी उड़ा रहा है कार वाला। अरे भाई साहब, तो इनका रोड पता नहीं इनका खोदना क्या होता है यार। साला जहाँ पर भी जाओ कुछ ना कुछ खोदे हुए रहेंगे ये लोग। पता नहीं इतना खोद के करते क्या। अरे इतना लंबा खोद डाले, अरे बाप रे, ये देखो, अबे उड़ के जाओगे, पीछे हॉर्न मार रहा है। ये पूरा ही खोद डाले भाई साहब। ये तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डालो डालो आके, ठोक दो आके साला। चलो यहाँ का जैसा भी हाल था, लाल बाग की तरह नहीं था यार। लाल बाग में तो कसम से मैं बता रहा हूँ उस दिन मैं गिर जाता। इतनी खतरनाक, मतलब पूरा वो बालू नहीं होते, बालू साले बिछा के रखे हुए थे उस दिन। ये हाँ रोड हमें बनानी है, रोड हम बना लेंगे, लेकिन कोई इंसान को अगर गिरना है तो गिर जाए। राइट गाइस, तो हम लोग इस समय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये अमीनाबाद वाला एरिया है। ये तो यहाँ के लोग तो कैसे भी चलाते हैं। ये देखो, मैं ये कह रहा था यहाँ की अभी दुकानें नहीं खुली है, नहीं तो दुकानें खुल जाती यहाँ पर तो भाई जीना हराम हो जाए। यहाँ पर ऐसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, घंटा इसे ना चला पाऊँ। यहाँ पर भी वो सस्ता वाला बाजार लगने लगा क्या भाई? लग तो रहा है ऐसे यहाँ पर कोई सवेरे सवेरे वाला कोई बाजार लगने लगा है, बुध बाजार टाइप। यहाँ पर तो हॉर्न भी बजाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हॉर्न बजाओ, सुनेगा ही नहीं कोई। तुम बजाते रहो अपना हॉर्न, तुम अपने में हॉर्न बजा बजा के संतुष्ट हो जाओ, कोई नहीं सुनेगा भाई। देखा उसकी कोई सुन रहा था क्या, वो जो आया था? चलो बे तुम खुजलाने में लगे हो, खुजला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे अरे मेरे नाक में खुजली मच रही है। अरे यार एक तो हेलमेट पहने हुए खुजला भी नहीं पाते हैं, बताओ ये कहाँ, ये उल्टा किधर आ रहा है भाई साहब? ये किधर आ रहे हो? जाओ हॉर्न मारे और निकल जाओ साले, ट्रैफिक कूद के। पता नहीं हॉर्न क्यों मार रहा है पीछे। चल तो रहे, जब सामने वाले चलेगा तभी ना पीछे वाला इंसान चलेगा। बेवकूफ़ों वाली बात है, जा पहुँच जा साले जो भी है। चलो यहाँ से तो वैसे अभी सिंपल रहेगा, रोड उतनी ज़्यादा कुछ उतनी कचर कचर है नहीं, थोड़ी बहुत कचर कचर है। नहीं है बहुत है यहाँ पर। अब इस वाली वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। चश्मे के बारे में बात कभी बाद में करेंगे। तो चलो, अगर ये वाली ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा देना। और अगर 4K रेजोल्यूशन अगर एसडी कैम का अगर अच्छा लगा होगा तो एसडी कैम को अब भी सब्सक्राइब का बटन दबा देना। क्या करूं? और अगर कोई भी अगर थॉट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जाके लिख देना। मैं तो कमेंट पढ़ता ही हूँ। चलो गाइस, अब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।